with day 30, 30 day 30, day 33 of daily live streaming. Yeah, and आज विल बी एनालाइजिंग गोल्ड एंड देखते हैं क्या हमें कितने ट्रेड मिलते हैं, किस तरीके से हम आज पूरा दिन प्लान कर सकते हैं. आई एम होपिंग कि हमें अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाए. लेट मी जस्ट गो बैक एंड लॉग इन टू माई अकाउंट. एक बार मैं इसको हाइड कर देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड गाइज. ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. तब तक ज्वाइन कर लो फटाफट. एंड जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं करे, टेक्स्ट देम दैट वी आर लाइव. एंड यस, अभी जस्ट कम्युनिटी में मैं एक बार डाल देता हूँ. 796. ऑल्सो आई एम लिटिल डाउन टुडे. मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सो डोंट माइंड. थोड़ा एनर्जी में हो सकता है एक शिफ्ट तुमको देखने को मिले, बट नो वरीज, ट्रेड में शिफ्ट नहीं होगा. ओके ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो. यस, लास्ट नाइट अगर जो लोग नहीं थे, जिन लोगों ने लास्ट नाइट की स्ट्रीम नहीं देखी है, लेट मी टेल यू, कल हमने 2 ट्रेड लिए थे. वन ट्रेड वॉज प्रीटी मच सक्सेसफुल. उसमें हमने $1700 का प्रॉफिट कमाया था. राइट, दिस वॉज द मूव दैट वी कैप्चर्ड. एंड उसके बाद हमने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था शॉर्ट के लिए, जो कि ये वाला ट्रेड था वो ऑलमोस्ट. एंड उसमें भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था. बट द ओनली थिंग इज़ दैट हमने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया था. समझ रहे हो ना? वो प्रॉफिट बुक नहीं करने की वजह से हमारा वो लाइक एस एल चला गया. एंड बट दैट वॉज कम्प्लीटली फाइन. इट वॉज अ वेरी स्मॉल एस एल बाय द वे. ओके, सो आई यूज़ दिस फोन. एंड या क्या तुमको अभी देखने को मिल रहा है? गोल्ड फॉल. येस एग्जैक्टली, गोल्ड फॉल. डोंट वरी, सारी चीज़ें तुमको देखने को मिल जाएगी. अभी हम इसे फुल्ली एक अच्छे तरीके से प्लान करेंगे. देखो, डेफिनेटली गोल्ड इज़ फॉलिंग राइट नाउ. एंड यहाँ पर बहुत अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट तुमको दिख रहा है. दैट रिट्रेसमेंट इज़ बेसिकली मार्केट इज़ ट्राइंग टू फिल दिस ऑर्डर्स जो कि यहाँ पर पेंडिंग है, बिकॉज द फॉल था. उसके बाद डेफिनेटली मार्केट हैज़ टू रिकरेक्ट हिमसेल्फ. राइट, सो रिकरेक्शन अभी तुमको देखने को मिलेगा, बट डोंट थिंक कि तुरंत ऊपर जाएगा. अभी बहुत टाइम है, डोंट वरी, बहुत टाइम है. ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा हरी करोगे, यहाँ पे थोड़ा लाइक अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है रुकने में या वेट करने में, देन देर इज़ नो पॉइंट. समझ रहे हो ना? but right now you have to wait because gold will take some time. And we'll be analyzing from the start. Okay, this was the only candle जो अभी तक close नहीं हुए. let me come back to the 1 hour. okay, this is the candle. okay, let's analyze this candle now. it was going this in this direction. यहाँ पे gap up open हुआ and this is the candle. let me measure this. crazy as move. I don't know कितने, it's crazy. okay, so अभी right now it is 1 minute left for this candle. ठीक है, एक बार मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ. ठीक है, आवाज़ सॉर्टेड है, सब बढ़िया है. इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 1 मिनट बचा है. ठीक है, सो लेट इट क्लोज. एंड एक अच्छा खासा तुमको यहाँ पे रिवर्सल भी देखने को मिल रहा होगा. वी आर गोना मार्क दिस रिवर्सल डेफिनेटली. ओके, एंड दिस इज़ द करंट हाई दैट मार्केट हैज़ टू ट्रैवल टू दिस लेवल डेफिनेटली. राइट, ये वाला लेवल डेफिनेटली कवर करना है. बट किस तरीके से कवर करेगा? डायरेक्टली ऊपर जाएगा? नॉट रियली. समझ रहे हो? देर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टली ऊपर जाएगा. इट इज़ गोना रिट्रेस. वी नीड टू फाइंड सम सेटअप. जस्ट बिकॉज ये नीचे गिरा है, हम डायरेक्टली यहाँ पर से बाई नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज देन इट कैन मैनिपुलेट. एंड अगर तुम्हारा एस एल छोटा है, देन एस एल इसके खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो एक बार मैं शेयर कर देता हूँ कम्युनिटी में कि दैट वी आर लाइव, सो पीपल कैन कम एंड ज्वाइन. एंड जो लोग अभी देख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आई एम आस्किंग गाइस टू जॉइन द कम्युनिटी. एंड वहाँ पर मैं ट्रेड शेयर करता हूँ. जब भी मैं लाइव आता हूँ तुमको पता चलता है. ईदर यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन वेन एवर आई एम लाइव यू कैन गेट टू नो दैट आई एम लाइव. ओके, जस्ट अ सेकेंड. जो लोग अभी देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दो. ओके, प्रदीप एक्स ट्रेड्स में आई हैव पुट दिस लिंक दैट वी आर लाइव. we live now. ठीक है,
लेट्स सी कितने लोग ज्वाइन करते हैं, एंड दैट इज़ फॉर द, दैट इज़ फाइन. ज्वाइन कर रहे नहीं कर रहे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. दैट्स नॉट द that's not what we are looking for right now. Okay, you see कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, प्रिटी 1 आवर फॉल. ओके, वेरी गुड 1 आवर का फॉल यहाँ पे तुमको देखने को मिला. डेफिनेटली व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी एबल टू सी हियर. ओके, there is gap up. Okay, at this level market has filled that high Vinay. Hello. So this is like a 1 hour candle that has fell like nothing. Definitely this is not a price action, this is completely uh, a fundamental analysis that you can call. back end में सारी चीज़ें चल रही है, it is because of the news. Okay, this is not how the price action moves. price action इस तरीके से move नहीं करता है. so ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्यों हुआ, क्या हुआ, जो भी हुआ, it was like a back end, it was all the news and institutions and this and that. Right now what we need to find is opportunity जहाँ पर हम अच्छा खासा एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं. You see that 1 आवर का कैंडल क्लोज हो चुका है, 15 आवर का जो कैंडल है वो भी क्लोज हुआ है. नाउ इट इज़ गिविंग अस अ गुड बुलिश मोमेंटम. ओके, सो राइट नाउ वी नीड टू जस्ट एनालाइज एंड थिंक कि ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा. अकॉर्डिंग टू मी ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा. ओके, लेट मी टेल यू व्हाई. अगर तुम यहाँ से बाय करते हो, आई मीन डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन नोज दैट यू आर गोना बाय फ्रॉम दिस लेवल. चलो तुम्हारा टारगेट ये वाला रहने दो, राइट, वेरी स्मॉल टारगेट. अगर के साथ भी अगर तुम बाय करते हो, यू सी दैट देर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी पेंडिंग एट दिस एरिया. ओके, it will not go up directly without manipulating or without doing something like retracing or taking out some stop loss. Okay, there are so many scenarios that can happen here. All right, so the reason is we're not gonna buy because we do not have any confirmations as of now. Okay, it is creating a nice support at this point. You see that on 5-minute time frame you'll be able to see that market is trying to create a good resistance and market is trying to reject off of that area. Okay, second thing you'll be able to see here, it is a good support at this point as well. Okay, अगर ये कैंडल ऊपर भी जाता है, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर ये जा सकता है एंड मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से हमें रिजेक्शन यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है. ओके, छोटे छोटे ट्रेड्स हम इसमें डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हैं. उसके लिए हमें और एक छोटा टाइम फ्रेम पे जाना होगा. ऑलराइट, एक बार मैं खुद को थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोगों को थोड़ा और अच्छे से दिखे सारी चीज़ें. ओके, नो नॉट दिस वन. ओके, ठीक है, नाइसली गोइंग अप. ओके, प्रिटी मच प्रिटी गुड कैंडल. बट तुम अगर ध्यान से देखोगे 1 मिनट अभी तक बचा है, हो सकता है इस लेवल पे जाके ये रिट्रेस भी कर सकती है. ओके, दिस वाज द प्रीवियस हाई, ये वाला हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है. सो वी आर नॉट गोना कंसिडर दिस हाई. ये वाला हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, सो वी आर नॉट गोना कंसिडर दिस हाई. वी आर फोकसिंग ऑन दिस हाई राइट नाउ. ऑलराइट, वी आर गोना गो फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. कोई भी अजम्पशन पे नई चीज़ें होगी एंड मार्केट गिरा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी पूरा ऊपर जाएगा, इस तरीके की बातें नहीं होगी. प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर हम आज ट्रेड करने का डेफिनेटली ट्राई करेंगे. दैट वी ऑलवेज डू, दैट्स नॉट द इशू. यू सॉ दैट गुड रिजेक्शन. ठीक है, 28 सेकंड में तुमको ये बॉडी इसके नीचे भी क्लोज होते हुए दिख सकता है. डोंट बी सरप्राइज. Okay, one thing that I would like to tell you all, okay, there is no gap when the market is going up right now. मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कोई भी गैप क्रिएट नहीं कर रहा है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़. ओके, दैट्स अ गुड न्यूज़. अगर गैप्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज देन इट वांट्स टू गो अप. अगर गैप क्रिएट कर रहा है देन इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट कम डाउन. ऑलराइट, ठीक है. अभी तुम अगर देखोगे ये वाला जो कैंडल था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे. ओके, चलो लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड एनालाइज कि कहाँ पर अभी तक गैप्स ओपन है मार्केट में. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी एविडेंट गैप जो तुमको अभी देखने को मिल रहा होगा. दिस इज़ अ गुड एफईजी. मी मार्क दिस. ओके, दिस इज़ 15 मिनट एफईजी. ठीक है, सो you might able to see something like this.
अगर ये 15 मिनट की इसमें अगर एंटर करता है, it might go to the half level of it, right? It might just like touch and you might be able to see something like this. Okay, तो इसीलिए अब हम कुछ भी बाइंग के लिए प्लान नहीं कर रहे. द रीज़न इज वी आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग फॉर बाय because there is high chances of it is tapping into that 15-minute FUG and then it might come back from that level. There is a second possibility. One is good, it directly gonna inverse that. ओके अगर कोई भी एफ इन्वर्स होता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि उस मार्केट को उस डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन में जाना चाहता है. सिंपल एज दैट. देखो, फर्स्ट इट रिजेक्टेड ऑन दिस एरिया 5-minute कैंडल. नाउ इट इज़ टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस लेवल. ये वाला लेवल इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड देर इज़ नो इशू. ये वाला लेवल ब्रेक होने में कुछ भी इशू नहीं आएगा. बट 15-minute FUG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको मार्क करके रख दिया. वी आर गोना यूज़ दैट इन द फ्यूचर. राइट नाउ व्हाट यूल बी एबल टू सी, इट फेल डेफिनेटली. ये गिरा, बट जस्ट बिकॉज गिरा एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है तो हम डायरेक्टली यहाँ से बाय नहीं कर सकते. देयर इज अ सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, देर इज़ अ FUG क्रिएटिंग एट दिस एरिया. ओके, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये वाले को. ठीक है, एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ. कूल, वी मार्क द इम्पोर्टेंट लेवल्स. अभी नाउ ये जो कैंडल है इसको पूरा रिजेक्ट होना पड़ेगा इस लेवल तक. अगर ये कैंडल इस लेवल तक रिजेक्ट होता है, दैट मीन्स दैट देर इज़ नो गैप व्हेन मार्केट इज गोइंग अप. That means there is a possibility that it might tap into this area. अगर इसको आके पूरा ही क्लोज कर देता है, then also we have some sort of confirmation that it wants to go up. Simple as that. ठीक है, बट अभी 2 मिनट बचे ये वाली कैंडल में. we need to wait for 2 minutes कि ये वाला कैंडल 2 मिनट में अगर इस लेवल तक अगर रिजेक्शन देता है तो किस तरीके से अभी प्ले आउट हो सकता है. यू सी, ये वाला FUG क्रिएट हो रहा है राइट नाउ, राइट. अब इसको ये क्रिएट नहीं होने देगा अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है एंड ये रिजेक्शन कंटिन्यू हो सकता है. ये इस लेवल पे भी आके क्लोज हो सकता है जिसमें FUG तुमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा. सिंपल एज दैट. ठीक है, गुड लेवल्स. ये वाला हाई था, 15 मिनट पे भी सेम हाई है, 5 मिनट पे भी सेम हाई है. नाउ मार्केट इज गोइंग टू दैट हाई एंड रिजेक्टेड ऑफ दैट एरिया. तो उस हाई को हम एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग हाई मान सकते हैं, जिसमें आगे चल के भी तुमको बहुत सारे रिजेक्शंस देखने को मिल सकते हैं. ओके, अगर अभी देखो यहाँ पर ये आया तो सही, बट इसने पूरा ही इस लेवल पे आके क्लोजिंग नहीं किया, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग किया. तो मैं इसको हटा दूंगा, ये वाली लाइन को, और मैं बस ये वाला मार्क कर दूंगा और सिंपल FUG. ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ पे FUG मार्क करोगे, अभी आई वॉन्ट टू सी कि इस FUG के बाद किस तरीके से नेक्स्ट 2 कैंडल्स रिएक्ट करती है. ओके, सो व्हाट्स गोना हैपन, ईदर दिस कैंडल जैसी क्लोज होती है 47 सेकेंड्स के बाद, जैसी ये कैंडल क्लोज होती है 47 सेकेंड के बाद, देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज. वन, इट डायरेक्टली गोना कम टू दिस एरिया. दिस, ये जो तुमको हाई दिख रहा है, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला हाई. ओके, ये वाला हाई. ईदर इट्स डायरेक्टली गोना कम टू दिस एरिया इस तरीके से, और यहाँ से तुमको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है. ठीक है, सेकंड, इस लेवल पे आने के बाद ये डायरेक्टली इस FUG को इन्वर्स भी कर सकता है और ये वाला तुमको देखने को मिलेगा. राइट, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज राइट नाउ. सो विच पॉसिबिलिटी दैट वी वांट टू गो फॉर? अगर इन्वर्स करता है तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, बिकॉज देन इट विल कम टू दिस लेवल. जो हमें चाहिए कि बिफोर गोल्ड कैन गो अप, इट शुड कम टू दैट लेवल, द लो. ओके, इट शुड टेक मोर stop loss from the low and then it can continue going higher. Then it makes more sense. तुम समझ रहे हो, जब भी गोल्ड, हमेशा एक गोल्ड का पैटर्न है, तुम अगर नोटिस करोगे, इट इज़ बिन मोर देन 4 years दैट आई बीन ट्रेडिंग. मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, ऊपर जाता है, स्लोली जाता है, रिट्रेसमेंट आता है, ऊपर जाता है, एक अच्छे खासे हाइज क्रिएट करते जाता है, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज. ओके, एंड डेफिनेटली गोल्ड मोस्टली जब एक ऑल टाइम हाई पे होता है, एक अच्छे खासे लेवल पे होता है, उससे हमेशा एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है. वो फॉल धीरे धीरे नहीं आएगा,
जिस तरीके से गोल्ड ऊपर जाता है धीरे धीरे, रिट्रेसमेंट सारी चीज़ें सब कुछ फॉलो करते हुए, उस तरीके से कभी फॉल नहीं होगा। देन वो फॉल होगा न्यूज़ की वजह से, चाहे तुम सीपीआई बोल लो, ये बोल लो, वो बोल लो, बहुत सारे न्यूज़ है, किसी भी न्यूज़ का रीज़न देखे गोल्ड आराम से नीचे गिरेगा। एंड देन इट विल गो अप, बट बहुत मच्छी मारी के बाद, बहुत ज़्यादा कुछ तुमको इतने ज़्यादा रिट्रेसमेंट देखने मिलेंगे, इतने ज़्यादा स्टॉप हंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेटअप्स क्रिएट होते होते बचते हुए देखने को मिलेंगे, तब जाके गोल्ड आगे ट्रैवल करता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन गोल्ड। डू नॉट अज्यूम दैट ये हो सकता है, वो हो सकता है। Okay, so there is no prediction when it comes to gold or any market. I never use the word called prediction. It's not the right word. I would say it's action and then reaction. मार्केट कुछ XYZ मूवमेंट लाता है, उसके ऊपर मेरा कुछ रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन मेरा ट्रेड होता है, समझ रहे हो? तो आई नेवर यूज़ वर्ड्स लाइक प्रेडिक्शंस एंड दिस एंड दैट। वी आर नॉट लाइक बाबा या कोई नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे कि प्रेडिक्ट करने के लिए, तुम समझ रहे हो? सो इट इज़ ऑल नंबर्स एंड यू नो आई एम अ नंबर्स गाय, सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, तुमको मैं एक बार क्विकली कल का प्रॉफिट दिखा देता हूँ ताकि तुमको एक अंदाज़ा आए कि हाँ कल हमने किस तरीके से इसको ट्रेड किया था। लेट्स गो लास्ट 7 डेज, चल ठीक है, लास्ट 7 डेज पूरा हिस्ट्री दिखा देता हूँ, छोड़ो यार क्या दिक्कत है। ये वाला ट्रेड था जो हमने कल कैप्चर किया था, और ये उसके बाद वाला ट्रेड था जो हमने कैप्चर किया था, दीज 2 ट्रेड्स। ओके, 1000 एंड 897 का ये हमने यहाँ पे कल जो ट्रेड लिया था उसका टीपी हमने हिट किया था। द ओनली थिंग इज़ दैट मुझे चाहिए था कि वो और ज़्यादा नीचे गिरे, एंड डेफिनेटली आज गिरा, बट कल रात में उसने मेरा टीपी हिट किया था, सॉरी एसएल हिट किया था। तो एसएल का रीज़न यही था क्योंकि मुझे बड़ा एसएल नहीं लेना था, बिकॉज अगर मैं एक दिन में 2 प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, ये इतने बड़े, मैं ऑलमोस्ट लाइक $3000 के प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, जो कि मैं अकाउंट अपना कितने 2000 से ग्रो कर रहा हूँ, ये अकाउंट 2000 से ग्रो कर रहा हूँ। एंड तुम अगर लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे 2000 से सारे ट्रेड तुम्हारे सामने लिया है, समझ रहे हो ना भाई? एसएमसी बेस ट्रेड करते हो या प्राइस एक्शन बेस? आई थिंक मैं बोलना चाहूँगा ओमकार भाई, आपको तो आई मीन आपको तो पता ही है, बट एसएमसी भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। आई वुड से आईसीटी मोर, नॉट एसएमसी, बट मैं उसके कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ जो एक्चुअली में मेरे काम आते हैं, ठीक है। जो कि हो गया लिक्विडिटी, दैट इज़ वेरी ट्रू। लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आईसीटी में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट ही उस तरीके से मूव करता है। जब तुम लिक्विडिटी की बात करो, इट वाज लाइक कि मार्केट मूव्स फ्रॉम वन लिक्विडिटी टू अनदर लिक्विडिटी, इट वर्क्स। सेकेंड इज एफईजी, एसएमटी, राइट? दीज आर द कॉन्सेप्ट, 3-4 कॉन्सेप्ट है जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और मुझे एक्चुअली में उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड बाकी तो प्राइस एक्शन तो चलता रहता है। एंड आई वुड टेल यू वन थिंग, प्राइस एक्शन, ओके, प्राइस एक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ अ ट्रेडिंग, इट्स हाउ मार्केट वर्क्स, ओके। जब तुम प्राइस एक्शन बोलते हो, एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग नहीं होता है। प्राइस आईसीटी प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है, अगर तुम इसको पढ़ोगे अच्छे से, आईसीटी भी प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। आईसीटी कुछ अलग नहीं है, आईसीटी इज जस्ट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्ट के बाद मार्केट पे तुमको देखने को मिलते हैं, और एक्चुअली वो वर्क भी करते हैं। दैट्स इट। ओके, इनफ ऑफ टॉक्स। राइट नाउ यू सी दैट ये वाला रिजेक्शन, ये वाला ब्रेकआउट तुमको अभी देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेकआउट। यहाँ से डेफिनेटली मार्केट इज़ इन्वाइटिंग लॉट ऑफ बायर्स राइट नाउ, ओके। बायर्स को इन्वाइट कर रहा है। द ओनली थिंग इज़ दैट हमारे पास कोई भी सेटअप नहीं है, इस वजह से मैं कोई भी अभी बाई के लिए ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली हो सकता है ये अभी अभी जो मार्केट एंटर किया है, ये 15 मिनट का जो एफईजी है उसमें एंटर किया है, ओके। एंड हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस लेवल से जो है इसका रिजेक्शन भी तुमको देखने को मिल सकता है, इस लेवल से, या एंटर करने के बाद यहाँ से भी मिल सकता है। अगर ऊपर भी कंटिन्यू जाता है, आई एम नॉट सरप्राइज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अलग कुछ प्लान करेंगे, सिंपल एज दैट। देखो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को हमें चाहिए मार्केट टैप इन करे वंस, ईदर देर इज़ अ सेकेंड पॉसिबिलिटी, या इसको डायरेक्टली इन्वर्स कर दे। अगर मान लो तुम, अगर ये वाला कैंडल यहाँ तक भी आता है, दिस वन,
एंड अगर नेक्स्ट कैंडल तुमको डायरेक्टली इन्वर्स भी पता चलता है कि इसको इन्वर्स करें, देन वी ऑल्सो हैव समथिंग प्लान फॉर दैट ऑल्सो. देखो, इट इज़ ऑल लर्निंग जो कि तुम यूज़ करते हो, एंड यूज़ करने के बाद मतलब ट्रेड में तुम यूज़ करते हो और उसके बाद तुम उसको लिखते हो. हर ट्रेड को मैं एक बार जनरल जर्नल करता हूँ, ठीक है. जर्नल करने का रीज़न ये होता है कि वो सेम मिस्टेक आप फिर से नहीं करते. दैट्स इट. बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे जो मार्केट में कभी कभी दिख जाते हैं, एंड मैं बस ट्रेड ले लेता हूँ उस पर, और वो हमेशा फॉर्म होते हैं, राइट. तो उसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है जो चीज़ें फॉर्म होती है और एक्चुअली में मार्केट में वर्क करती है. ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट रियली हेल्प मी, दैट इज़ बैक टेस्टिंग. ओके, कोई भी मान लो कोई भी एक सेटअप है या कोई भी स्ट्रक्चर है, कुछ भी है, go back and check how many times it is working in the market, how many time it is actually working in the market. एंड जब उस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है, हाउ मार्केट रिएक्ट्स, नॉट ओनली गोल्ड, गो टू BTC, गो टू अदर पेयर्स. ओके, सी कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट पेयर में वो किस तरीके से मूव करता है या किस तरीके की उसका एक्शन रिएक्शन होता है. नोट दैट थिंग डाउन एंड इट विल हेल्प यू सो मच. बैक टेस्टिंग के लिए अगर तुम्हारे पास इसका प्रीमियम नहीं है, तुमको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जिससे तुम फ्री में बैक टेस्ट भी कर सकते हो. इट्स अ गेम डूड, इट्स अ गेम. अगर तुम जिस दिन करने लग जाओगे, यू लाइक इट एंड देन तुम्हें बहुत मज़ा आएगा. सिंपल. देखो, एक रिजेक्शन आया, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये रिजेक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक है. उसका रीज़न ये है क्योंकि जब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, जो लेवल होता है जहाँ से हमेशा मार्केट एक रिफ्यूज़ करता है चीज़ को आने में, राइट, वहाँ पर हमेशा तुमको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है. एंड देन अगर इसको कंटिन्यू करना है, देन नेक्स्ट कैंडल हमेशा उस डायरेक्शन में देखने को मिलती है जो डायरेक्शन में मार्केट एक्चुअली जाना चाहता है. तो इस केस में हो सकता है नेक्स्ट कैंडल तुमको ग्रीन देखने को मिले, क्योंकि वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है. व्हाट हैपन टू गोल्ड ब्रो? नथिंग हैपन डूड, इट हैपन्स ऑल द टाइम. जब भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जाता है या बहुत ज़्यादा हाइस पे जाता है, ये हमेशा इसी तरीके से नीचे आता है. नथिंग हैपन. कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं. इट्स बेसिक चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे होती है. गिरा दैट्स फाइन. नाउ वी हैव टू फाइंड कि अब ये जो गिरा है इसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं. सिंपल एज दैट. दिस इज़ ब्रूटल. या इट्स नॉट ब्रूटल है, इट्स ऑल राइट ओनली. आई मीन हमेशा गिरता है, लाइक ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं है. लाइक यू नो, बहुत बारी जब ऑल टाइम हाई पे जाता है, दिस इज़ द हमेशा इसी तरीके से गिरता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर ऐसे आता है. लाइक यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती है. इट्स नॉट ब्रूटल, इट्स ऑल राइट ओनली. ऑल्सो जो लोग देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. डिड यू कैच द फॉल? आई वॉज नॉट इवन ट्रेडिंग दैट टाइम एंड आई डोंट एंटर लाइक दैट डूड, जस्ट बिकॉज मेरे को 3-4 कैंडल यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं एंड इट्स गोना फॉल. मैं बहती गंगा में हाथ धोने वालों में से नहीं हूँ. मैं अपनी गंगा बाद में फिगर आउट करके ट्रेड लेता हूँ. रिमेंबर आफ्टर अ ह्यूज फॉल राइज. या, दैट्स ट्रू इन लाइफ बट नॉट इन गोल्ड. ओ, इट इज़ ट्रू इन गोल्ड, बट बहुत टाइम के बाद, कम बैक बहुत टाइम के बाद होता है. यू सी दैट इट केम डाउन, बट जो बॉडी का क्लोजिंग है ये ऊपर ही हो रहा है अभी फ़िलहाल. लेट मी सी ये किस तरीके से एक्ट करता है इस लेवल पे. ऑल्सो इफ यू सी दैट देर इज अनदर एफीजी दैट क्रिएटेड हियर. ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल एफीजी दैट मार्केट माइट नॉट ऑब्जर्व ओनली, बट बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं विच एफीजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट. कि यार डेफिनेटली 30 मिनट पे भी एफीजी होते हैं, 1 आवर पे भी एफीजी होते हैं, राइट. भाई एक ट्रेड दे दे आज. डैम, डेफिनेटली ब्रो, अगर मिलता है तो ज़रूर देंगे. आई होप कल वाली ट्रेड लिए होंगे तुम लोगों ने. $50 ब्रो, जस्ट 2 hours. लकी आई वॉज नॉट ट्रेडिंग. शपथ पक्का बाई साइड लिया होता. डैम, नहीं. यू हैव टू कीप वेरी योर आई शार्प. जो तुम इस तरीके से इनर वर्ल्ड. हेलो ब्रदर, हेलो व्हाट, ठीक है. रिजेक्शन, आई डोंट थिंक सो ये वाले एफीजी को ये थोड़ा बहाव देगा, बिकॉज इट्स टू स्मॉल एंड देर इज़ अ रेस्टिंग एफीजी
बिफोर दिस आई वुड से इट रिस्पेक्ट दिस मोर. अगर लेट्स सी पता चल जाएगा हमको नेक्स्ट 4 मिनट में या नेक्स्ट 10 मिनट्स में, बिकॉज ये वाला कैंडल आई थिंक माइट गिव अस गुड रिजेक्शन और माइट नॉट. ओके, अगर ये पूरा ही लास्ट के 3 मिनट पे इस लेवल पे आ जाता है जो भी है, देन लास्ट के 2 मिनट में ये पूरा ऐसा इस तरीके से चला जाएगा. तो हमें ये भी नहीं चाहिए कि पूरा ही रिजेक्शन स्टार्टिंग में ही दे दे. समझ रहे हो? तो या दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी देयर. 3 minutes for this rejection. Let's see. It did enter into the 15-minute FUG, by the way. Okay. अगर रिजेक्शन लेना है तो और थोड़ा उसको हायर जाना पड़ेगा, तब जाके वो रिजेक्शन थोड़ा वैलिड माना जाएगा. डायरेक्टली टच करके आना वो कैसा लगेगा मैं बताता हूँ तुमको. 15 मिनट पे इट विल, 30 मिनट पे देखते. देखो 30 मिनट पे इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. ठीक है, 50 मिनट का एफिजी है एंड 30 मिनट का जो कैंडल है इट वेंट इनसाइड एंड नाउ इट्स कमिंग डाउन. लेट्स ऑब्जर्व द 30 मिनट कैंडल. आई वांट टू सी कि 30 मिनट पे किस तरीके से प्ले आउट होता है. ऑन 30 मिनट इट्स अ वेरी गुड दिस स्ट्रक्चर टू बाय. ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ? एक अच्छा खासा फॉल है, एक अच्छी किसी दोजी है, मेंटेन किया है उसने, एंड एक अच्छा खासा इंगल्फिंग कैंडल भी तुमको देखने को मिल रहा है उसके बाद. द ओनली थिंग इज दैट आई फील लाइक ये पूरा तरीके से रिवर्स कर सकता है. दैट्स इट. चलो लेट्स कम बैक टू द 5 मिनट. नाइस. ओके, जब तुम कुछ बोलते हो एंड वो मार्केट में होता है, यू डेफिनेटली गेट्स लाइक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. बट देर आर like ways sometime you can just like make mistakes because you think every time what you are saying is happening. You might get a little arrogant and like take some weird ass trade. Okay, rejection. देखो क्या होता है ना, सबको पता है राइट नाउ, एवरीबडी नोज दैट अगर तुम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, सबको पता है इस लेवल पे मार्केट जाएगा. ओके, एवरीबडी नोज राइट. बट किस तरीके से जाएगा, कब जाएगा और कितने स्टॉप लॉस खा के जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम समझ रहे हो? अगर इतना कैपिटल होता जो कि इस लेवल पे भी आके अगर रिवर्स करता है तो भी फ़र्क ना पड़े, देन एनीबडी शुड बी बाइंग फ्रॉम हियर. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. बट दैट्स नॉट हाउ मार्केट वर्क्स. ओके, nice interfere into that 15-minute gap. Let me just see one more thing. Okay, we are waiting to short again. No, we are not waiting for short and we are not even waiting for buy. We're just waiting for a perfect direction. अभी तो कुछ बायस प्लान नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. ओके, ये डेफिनेटली इट इज़ इन्वाइटिंग दिस बायर्स राइट नाउ, बट वी आर नॉट गोना गेट इनटू दिस. दिस कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ एसएल्स, इसलिए मैं इसमें जंप नहीं कर रहा हूँ ये वाले में. मैं आई थिंक इससे पहले भी आई मेंशन दैट बहती गंगा में हाथ नहीं धोता हूँ मैं. ओके, ओके, या हाँ, आई वांट टू चेक समथिंग.
ठीक है, ये 50% है. नाउ मार्केट इज इन डिस्काउंट जोन, राइट. वेरी गुड चांसेस ऑफ बाइंग, बट ओनली थिंग इज दैट वी आर नॉट गोना बाय, बिकॉज जैसे मैंने बोला बहती गंगा में हाथ नहीं धोते. सिंपल एज दैट. This is 50% level. It might go touch that level, but it has to reject and take out some stop loss. देखो, अगर लॉजिक समझना है तो ध्यान से समझो. ओके, जब ये वाला मूव आया, जो ये मूव तुमको अभी दिख रहा है, डेफिनेटली देर इज लॉट ऑफ एस एल्स एट दिस लेवल राइट नाउ. ओके, एट दिस लेवल एंड एट दिस लेवल, एंड आई एम प्रीटी श्योर इस ये जो रिट्रेसमेंट आया था, ये जब आया उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के एस एल यहाँ पर भी है एंड इस लेवल पे भी एस एल है. डू यू रियली थिंक, ओके, डू यू रियली थिंक मार्केट विल not take all these SLs, okay, and it can go up? And that to gold is the most lalchi like chart I have ever seen. Okay, do you really think it's gonna directly do that? समझ रहे हो? So just basic common sense, okay, use that. Okay, let me remove all the levels. Okay, you saw this rejection, okay, just because it went to this level and it is rejecting off of that area, also good sign. You're getting my point? Also good sign. Also people who are watching, and if you like the stream, then like the stream and subscribe to the channel, and also turn on the notification, because whenever I'll come live, then you'll be able to see me live. That's it. Okay, gold is like sabki lega. Exactly, gold is very lalchi. It manipulates from both the level. I've been noticing, okay, I've been back testing. मैं 8-8 घंटे बैक टेस्ट करता हूँ, मैं 5-5 घंटे बैक टेस्ट करता हूँ. इट्स अ गेम फॉर मी, ठीक है. मैंने हर टाइम नोटिस किया. देन इट मैनिपुलेट्स ऊपर साइड पे, इट मैनिपुलेट नीचे साइड में. यू पीपल थिंक दैट ओ ब्रेकआउट हुआ, इट्स गोना गो. नो, इट्स लाइक, and then it goes up and then it manipulates from उधर के साइड से भी. तो लाइक इट्स टू मच कन्फ्यूजिंग समटाइम. तो इसीलिए उस लेवल पे कभी भी ट्रेड करना ही नहीं है, करना ही नहीं है. सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेडर, चाहे तुम कितने भी बड़े बड़े ट्रेडर मान लो, लाइक आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, राइट. तुम कितने भी बड़े बड़े ट्रेडर उठा के लाओ, उनके टेलीग्राम पे जाओ, 2-3 लाख फॉलोअर्स है. दे कम लाइव, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग देम, एवरीबडी इज वॉचिंग देम. रिसेंटली देयर ट्रेड्स ऑल्सो, वो ट्रेड लेते हैं, एस एल खाता है, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है. उनके ट्रेड लेते हैं, एस एल खाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, राइट. उस टाइम पे वो लोग कट नहीं करते ट्रेड, वो लोग ट्रेड कट नहीं करते, बिकॉज उनके पास ह्यूज कैपिटल है. ओके, ह्यूज कैपिटल है और ब्रोकर कैपिटल है. बट जो लोग छोटे छोटे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में $50 है, जिनके अकाउंट में $100 है, डू यू रियली थिंक उन लोगों के पास उतना कैपेसिटी है कि वो उतना वो ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते वो लोग. तुम समझ रहे हो? सो हैविंग अ बिग कैपिटल एंड देन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट्स वेरी फकिंग ईजी. इट्स वेरी फकिंग ईजी. तुम समझ रहे हो? तुमको मैं अभी लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैं बाय कर लूँ 2-3 लॉट के साथ, और मैं अच्छा खासा $1000 का निकाल भी सकता हूँ यहाँ से, बिकॉज मुझे पता है कि हाँ होगा ही होगा डेफिनेटली. समझ रहे हो ना? सो इट्स नॉट वेरी हार्ड जब तुम बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो. इट्स वेरी हार्ड जब तुम्हारे पास कैपिटल कम है और तब जाके तुम उस कैपिटल को ग्रो करते हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो ट्रेडर है विथ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, आई थिंक दे मिस दैट थिंग. ये लोग मिस कर देते हैं ये चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि लोगों के पास उतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है. दैट्स इट. ओके, इट इज़ ब्रेकिंग दैट 50 मिनट का लेवल एज वेल. वेरी गुड. ओके ओके, ये जो वाला, ये जो था, जो मैंने बोला था कि ओ अभी देखो, देयर वर 2 फेयर वैल्यू गैप्स एट दिस पॉइंट. समझ रहे हो? ये वाला एंड ये वाला. व्हाट हैपेंड, ये वाले को इट केम डाउन एंड 5, राइट, 5.
it did came this at this level. तुम समझ रहे हो? So people who thinks that like ICT concept doesn't work, or it's just like advanced level for basic as concepts and this and that, let me show you. This candle went up, it came down. Where was the candle ka the low? At this area. What is the other probability इस area पे? ये वाला, right? And also what was the other probability? That 15-minute FEG. What I'm gonna consider 5-minute FEG, right? So why did it exactly come to this area and then bounce off of this, right? So it does work. It does work, okay? It's not like it doesn't work. अगर ये वाली वीक तुमको देखने को मिल रही है, that means that market wants to travel और थोड़ा ऊपर. Just by looking at this week, just because market came down, tap into that 5-minute FVG and then it's going up, it can go up thoda or. Okay, right now it is into that 15-minute fair value gap. Okay, it is in that 15-minute fair value gap. Simple as that. My leg. ठीक है. Enough of profit for the buyers, by the way. Enough of profit for the buyers. What is the 50% of this? Let me see. Euro USD trade, please. Euro USD. Wait, we'll do that. Hold up. Uh, 50%, right? Okay. This 50% of this fair value gap. This 50% of entire fall. ठीक है? So rejection probably would be at this area. अगर breakout होता है, that would be interesting. So focus on this box right now. Analyze Euro USD. यार देख के पता चलता है यहाँ से. सिंपल है, ठीक है, बेसिक है. ज़्यादा आई टुक लॉन्ग फ्रॉम 1.19 1192 25. Okay. See, there are two possibilities here. Definitely you know that, but high probability of it is rejecting off of this area. यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, इस लेवल तक हो सकता है ये मैनिपुलेट करेगा, ये वाला हाई ले ले, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ऑफ दिस एरिया. अगर प्रॉफिट में हो तो सोच सकते हो, अदरवाइज आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ऑफ दिस, नथिंग एल्स. ये तुमको हर बार ही देखने को मिलेगा, ठीक है. सो अगर एक अच्छा खासा बाय कर रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू टेक आउट सम पार्शियल अमाउंट. सिंपल एज दैट. लेट्स सी. ओके, आ गया रिजेक्शन. ओके, वही चाहिए था. बहुत खरीद लिया, बहुत कर लिया, बाय बाय. Okay. Nice rejection. Did it reject from the 15-minute? Sorry, 5-minute? Exactly. Okay. Sorry, 15-minute FEG. Also the
50% ऑफ इट, समझ रहे हो, उस एफईजी के 50% में रिजेक्शन हुआ है. ऑल्सो देर इज अ सपोर्ट एट दिस लेवल. ये अच्छा फॉल था, अगर तुम इसको कैप्चर कर सकते हो तो कर सकते हो. इस लेवल तक मोस्टली ये कंटिन्यू कर सकता है. ठीक है. Exactly rejected off of the half level of 15-minute FVG. Okay, this was the level for the half of 15-minute FVG. Focus on that. ठीक है. Just because गिर रहा है don't sell. ठीक है, गिरेगा और गिरेगा, फोमो क्रिएट करेगा, डोंट गो फॉर इट. ठीक है, आई नो, मुझे भी पता है अच्छा मूव है, हमें पता था रिजेक्शन लेने वाला है, फिर भी हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया. नहीं लिया बिकॉज इट कैन बी अ फेक रिजेक्शन एज वेल, इट कैन बी अ रिकरेक्शन इन द मार्केट. ओके, एंड वी वांटेड टू अवॉइड दैट, दैट्स इट, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट टेक एनी ट्रेड. ठीक है, सिंपल एज दैट. ऑल्सो नोटिस करना एक चीज़, इट केम डाउन पूरा, लास्ट के 2.5 मिनट बचे, 2.5 मिनट में इट कैन रिजेक्ट ऑफ ऑफ दिस एरिया फुल्ली. ओके, ऑल राइट. ठीक है, you might be able to see this right now. जस्ट बिकॉज गिर रहा है कोई भी सेल नहीं करेगा. हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग ट्रैप्ड इन दैट सेल. ओके, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, nobody will sell. Let me get some water, hold up. It did created a good trend line from the bottom. Hello, what up, what up, what up, what up. It did created a great trend line. Okay, the only thing is that इसको ब्रेक करके फिर से मैनिपुलेट कर सकती है. दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी, इट कैन डायरेक्टली ब्रेक दिस लेवल एंड इट कैन डायरेक्टली फॉल. समझ रहे हो? या, बट डेफिनेटली वी डू नॉट हैव एनी सेटअप राइट नाउ. The only thing is that it's going down does not mean that we're gonna sell off of this area, but it's a great area though. It's a great area. देखो, you'll be able to see at least this level. ठीक है, otherwise next level is this. This is what I'm interested in. You saw that rejected? Okay, all right. Strong rejection, by the way. There are, it might
go to this. We can catch this fall if you guys are with me. Okay, we can catch that fall, but again it has to break this level, then only we can go for it. You see that there was this level. इसको हम एक बार हटा देते हैं. अगर तुम हेलो विनोद झंडे, हेलो बाबू, कैसा है? ठीक है. There is no FUG at this area. What this candle is trying to do? Okay, this candle is gonna reject, hella reject. ये कैंडल पूरा रिजेक्ट होने वाला है बॉयज, गेट रेडी फॉर दैट. इसमें भी तुम अच्छा खासा एक स्कैल्प निकाल सकते हो. ये कैंडल पूरा ही रिजेक्ट होने वाला है. ओके, आई एम गोइंग फॉर इट. डू यू वांट मी टू लाइक शो यू क्विकली $500? लेट मी शो यू. ओके, फटाफट करना पड़ेगा, टाइम नहीं है. ऑलरेडी गिर गया है क्या? वेट, no, hold up. It's gonna reject. Last के 2 minutes. Let's see. If the rejection is gonna happen, we want the rejection below this level. Yes, exactly. It is rejecting. Lovely. Let me show you quickly 500. Not much. It might reverse. Very risky area by the way. Okay. Only sell if it's gonna cross this one. Hold up. Is it gonna break? What? Why is it glitching, dude? Target trail होगा, okay? If it comes down, just focus on this now. Is it trying to like accumulate a little bit? ठीक है, थोड़ा accumulation होगा. Okay. ठीक है, 300, 200, 300. ठीक है, 500 already आ गए. We can cut here, but we're not going to. So just wait and watch. We gotta wait.
No, definitely a risky area. ठीक है, it was early entry, but not a wrong entry. अगर wrong भी होती है, then we have alternative plan for that also. Don't worry. No, until and unless this breakout, nobody's gonna sell. Lovely. Slow claps. You know what I'm saying? Oh, I should not be that cocky. Hold up. I should not be. Yep, I think I should be. I should be. Let's go. How much it is? Bad rejection. I told you, यहाँ से this is bad. This rejection is bad. But this candle is nice. Good 1:1, right? But you see that it is taking support off of this area a lot. That means this area can be unbreakable. अगर इसको break करता है, then you will see the fall. Just focus on that. Too many wicks at the downside. Also, everybody lock in, like the stream, fatafat, subscribe to the channel, and turn on the notifications so you'll be able to see daily fucking live streams. All right. Okay. Fuck this shit. Oh god. Green candle. Exactly. Told you it's gonna manipulate. That's why I said only this breakout. That's it. Okay, not before this. Only this breakout. Crazy. We're out. Okay. ठीक है. I'm excited for this candle. But this wick is crazy, dude. This wick is just crazy. It's crazy, it is.
Bam. Come on, dog. Hey. Oh shit. Oh shit. Are we gonna take that profit? Boys, let's go. W's. As soon as I take that profit, spam W's in the chat. Okay? Spam W's in the chat. Are you guys able to see that? Spam the fucking W's in the chat, boys. Nah. It's rejecting. Nah. I think 500 is also not bad. The only thing is that I'm holding on this. It is a great support. इसलिए मैं बोल रहा था तुम लोगों को. It is taking support off of this area again and again and again and again. Okay? Don't worry about it. Don't worry about it. 750. All right. Are you guys ready to spam W's in the chat? Tell me that. Are you guys ready to spam W's in the chat? Are you guys ready to spam W's in the motherfucking chat? Let's fucking go. That's how we roll, bitches. W's, fatafat. If you're not spamming the TP, dude, fucking TP. Fucking kidding me, dude? Let's go, let's go, let's go. First W of the day. Exactly, spam that W, dude. Don't be shy with it. Kar lo. Let's go. Love that. Let me show you 3 day ka profit. Let me show you 3 din ka profit. Okay? Aoge. Don't be shy with it. You saw that? 1,000, 1,700, 1,000, 1,700, $97 loss. That's how you cut the losses. Okay? And then now 12.75. That's how you do it. You getting my point? You bitches don't fuck with me. किधर है तुम्हारे trader? So yeah, very basic ass move. कुछ crazy move नहीं था, समझ रहे हो? But you saw that rejection from where market is rejecting, exactly from the TP. That's why you need to have the ability to keep your TP at a certain point where market can flip from that area, because exactly it came down. Let's go. Can we do this? Can we do this now? Can we do this now? Ayo. चलो यहाँ तक आया ना. Let's do this. Let's see. Exactly. Bro, can you see here amount? आपको दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे? हाँ, दिख रहा है ना? So भाई, ठीक है? And it can fall more, okay? Don't think that it just. मैं तुमको बताता हूँ अभी किस तरीके से होगा सारी चीज़ें. This was a very basic move, okay? Let me tell you. जब भी मार्केट इस तरीके की वीक क्रिएट करता है, there is a candle that comes and take all those orders, okay? Right now it did fucking came. तुम समझ रहे हो? अब देखो, ध्यान से देखना ये चीज़, ठीक है? मैंने क्या मार्क किया था? I did mark the 5 minute का FEG, right? I did mark the 5 minute का FEG, right? It rejected off of this area that is a 50% of the market, and respectfully ब्रो चिल करो यार, किसने क्या बोल दिया? या 0.7, ओके, रिस्पेक्टफुली. सो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे? Yeah, so I was saying 5 minute के इसमें it came down, okay, rejected off of this area. Now it is trying to go into the fair value gap. That was a 15 minute, but there was a good rejection, समझ रहे हो? तो तुमको और फॉल देखने को मिल सकता है.
ठीक है, डोंट बी सरप्राइज अगर मार्केट डायरेक्टली इसमें इन्वेट करता है तो, ये वाले में. दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू ऑल टू नॉट बाय. Do not buy just because market fell. It is gonna recorrect and do this and that. Don't buy, don't do all this because of just bugazi, you know what I mean? So yeah. Let's come to the 1 minute again. Okay, nice level. High probability of it's gonna fall more to this area. You know why? Because no, it didn't reject off of this, it reject off of this, right? So yeah, let's go. Crazy. Let's see. From the everyone's perspective, let me tell you, right? This high has been taken out, this high has been taken out. This was the one of the most important high, right? I feel like when market will take this high, then you might be able to see some zoop in the market. समझ रहे हो? अगर मान लो, just let me just show you the direction. Okay, focus. If this, not exactly, but understand this, and this happens, ठीक है, this happens, then you might be able to see this. ठीक है, समझ गया? I'm not talking much because my throat is a little gone. Don't ask me why, but yeah. Okay, be ready for और ज़्यादा fall. Just go drink some water, hold up.
ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, तुमको आवाज़ नहीं आ रही थी. नोबडी टोल्ड मी दैट यू गाइस आर नॉट एबल टू हियर मी. ठीक है, लेट्स गो. नाइस 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 नाइस, इट्स मूविंग pretty nice to this level. Guys, you might able to see another fall. You might be able to see another fall. It just went up very quickly. You saw that. हमने अगर यहाँ पे book नहीं किया होता, what would have happened? Why did I book from this level, right? The reason behind I booked from this level because I knew that there is a very sensitive level. That level is very sensitive. Market can jump or bounce off of that area, and it did happen. You're getting my point? So, yep. And don't think that it's directly gonna come down now. थोड़ा और मोमेंटम आ सकता है, थोड़ा वेट करो उसके लिए. लेट्स गो. ये जो ट्रेड हमें मिला था, it was a retracement and we captured that retracement and it was a perfect trade. Now कोई भी सेल के लिए आज ट्रेड नहीं होगा. ठीक है, सेलिंग इज़ वेरी रिस्की टुडे एंड कुछ पॉइंट्स तो तुम लेके जाओगे, बट डेफिनेटली उसके साथ यू माइट बी थोड़ा कॉशियस, थोड़ा तुम्हें वेट करना पड़ेगा अगर तुम सेल कर रहे हो तो. बट ये देखो, दिस इज़ अ गुड लेवल, डबल टॉप टाइप शिट इट्स हैपनिंग राइट नाउ. एंड या ये भी हो सकता है. ठीक है, सो डोंट बी सरप्राइज. उसके बाद कंफर्मेशन का वेट करेंगे. 5 मिनट पे रुकेंगे, 1 मिनट पे जाएंगे नहीं. 1 मिनट पे इट्स लाइक टू मच zoomed in, so you might get yourself wrong. But 5 minute पे it is very sorted. It tapped into that area again. It is in that 15-minute FEG right now. We are waiting for market to either just inverse that FEG or is it directly reject from that FEG. It is rejected before and it took support and then again it went up, and now we need to see that if it's gonna directly inverse or directly come back. Simple as that. Crazy? Okay, cool. What else? Also, I think this was the one that we were. Okay, I said it's gonna. Okay, it is manipulating of this area. Okay, it might reject. Okay, just because it break this one, or this is if it's gonna continue, then this OTP. Also with this, I need to see. USD JPY, hold up. Okay, what is the structure in USD JPY right now? It is coming down, that means gold is going up. ठीक है, gold is going up. Okay. Okay. ठीक है. We need to see if ये वाला एरिया फिल होता है या नहीं. ठीक है, that is very interesting right now. Let's go.
2 things, focus on this 2 things, ठीक है. Also like tell me, जो ये वाला previous वाला trade था कितने लोगों ने trade लिया था? Honestly tell me कि तुम were you in that trade when I took short on that level? How much did you make? Inner world, how much did you make? What's your real name, brother? It's very weird to call you inner world. Nothing much. Payal Rajput. Is that a girl's name or a guy's name? All right. Just hold on. ठीक है. What we are waiting for right now, ठीक है. We are waiting for this to get take out or this to get take out. These are 2 signs right now, ठीक है. उसके बिना we cannot plan anything. I might say कि oh it's gonna go up and this and that, but without that there is nothing that you can confirm right now. Any trader on this trading on this platform right now, let me see what people are doing. Okay, it's just fun to see what people are doing, because people sometimes just like go crazy with it. Let me see. ट्रेडिंगच जमत नाही तर आता हे एआय ट्रेडिंग कुठून आलं बाबा नवीन आणि हे कधी शिकू मी? एआय ट्रेडिंग शिकणं काही फार अवघड नाही. मी Oh, he took another shot. Oh, he's in Ethereum. Okay, whatever. Who do you guys watch? Tell me, who do you guys watch? जिंदगी बदल जाएगा. I think he also took sell, right? He also took sell, but I think his TP was pretty much Zada, so that's why like, oh, he's planning another sell. That's crazy. We are, as he should, as he should, as he should. व्हाट्सएप कर दिया भाई, रिज्यूमे व्हाट्सएप. He's also planning a sell. That's good. जिंदगी बदल जाएगा. What this guy is doing? बना ले He's कितना trading BTC, so fair enough. What this guy is doing? This guy is भैया मेरा ड्रीम all right. मनी सेकंड. Fuck it. Okay, my reason is very simple. ठीक है, let me tell you my reason. I don't know how many people tell you the reason that why they are selling or why they are buying. Let me tell you something. Okay, so right now market is going to this area that is a 50% of the FUG that was like a 15-minute FUG. Okay, and abhi right now it has traded into that zone again. It's coming back, and now again it is going into the zone, right? So what we need to see is that is it gonna trade, like is it gonna inverse that fair value gap? Agar inverse karta hai, then there is no way we're gonna sell from this area, even though like these people are like directly waiting for market to go to that level and wahan se sell kar denge, but that is not how it works, right? You need to I think even if it's gonna come down, we need to see some sort of setup or some sort of like a bullish momentum, तब जाके हम वहाँ पे sell कर सकते हैं. Just because उस level पे जाके तुरंत we cannot do that. We cannot do that. ठीक है? Is it getting too much? बहुत ज़्यादा confusion है तुम लोगों को या नहीं है? Tell me that. Okay, so the only thing is that if it's gonna come down, it's not gonna come down directly also. तुम समझ रहे हो? तुम यहाँ पे तुमको डेफिनेटली बहुत सारे विक्स देखने को मिलेंगे, तब जाके हो सकता है तुमको ये अच्छा खासा सेल दे दे, राइट? यहाँ पे भी तुमको विक देखने को मिल सकती है. तो ओनली थिंग इज दैट तुमको नहीं चाहिए कि तुम स्टॉप लॉस स्टॉप तुम्हारा हंट हो जाए इन द बिगिनिंग ओनली.
दैट्स वाई वी आर वेटिंग एंड वी आर पेशेंटली वेटिंग कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में मूव और कर सकता है. ठीक है. We took one trade, it was a win, but it was a retracement trade. Okay. So another, it did came to this level and okay, easy peasy trade, very easy trade. Okay, but right entry is gonna be very important. Right entry is gonna be very important. That's it. I would say this, right entry is gonna be very important. अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, यू विल बी एबल टू सी दिस एफईजी हियर. ठीक है. एंड मार्केट हैज ऑलरेडी टैप्ड इनटू दैट एफईजी. अभी नाउ is it gonna inverse that FVG or is it gonna just tap and go up? That's very important. We're not gonna sell abhi tak. We need some sort of setup, some sort of confirmation, then we can go for it. Fuck, so hot. Okay, it did tap into that area. ठीक है. और थोड़ा ऊपर जाएगा, और थोड़ा ऊपर जाएगा. I don't want to go against everyone and be like कि ऊपर जाएगा, but there is a very valid reason. It came back, it tapped into that 5-minute fair value gap, it tapped in, and then tap in के बाद you have to show some sort of momentum. That's how the gold works. Exactly. Yeah, this is so bad. Hell no. Okay. This is the exact rejection. And the next candle is bullish. When you see wick like that, it has to go up. But okay. When you see something like that, it has to go up. Can I say this again? When you see something like that, it has to go up. Where is the sell, dude? Where is the fucking sell? Okay? क्या बोला था, यहाँ से विक देखने को मिलेगा तभी जाके कुछ हो सकता है. It's bullish, dude. Don't think that like just because of यहाँ पे retracement हुआ तो directly यहाँ पे sell आ जाएगा. नहीं. I think everybody is thinking like that. That's not how it's gonna work. Nice. ये कैंडल पूरा रिजेक्ट होगा बाय द वे. हाई चांसेस ऑफ दिस कैंडल गेटिंग रिजेक्टेड. मार्क माय वर्ड. मैं रील काटूंगा इसकी अगर ये हुआ तो. ओके, आई एम गोना कट फकिंग रील आउट ऑफ दिस कैंडल विल 90% दैट्स माय प्रोबेबिलिटी इट्स गोना रिजेक्ट एंड यू विल सी बड़ा विक ऊपर से. थैंक यू सो मच इनर वर्ल्ड. I hope you're subscribed and I hope you're like part of the community, and yep, also follow me on Instagram if you haven't, and yeah. Let's see. 3 मिनट बचे. व्हाट डू थिंक? रिजेक्शन आएगा? येस, नो, मे बी. Be interactive, guys. Don't act like a dead people. Okay, if you're watching, just like chat. Okay, थोड़ा रिजेक्शन और थोड़ा रिजेक्शन.
2 मिनट के बाद ज़्यादा आएगा, अगर आएगा तो। ओनली इफ इट वांट्स टू गो डाउन, ओके। Let's go. Hype yourself up. I know it's like almost 11, but get ready. You might able to see some crazy ass momentum. If you are not ready for this, get ready. Tell your friends that we're here and we're trading. I think रील नहीं कटेगी आज. What do you think? क्या रील कटेगी? 1.5 मिनट बचा है. Almost like 1.5 मिनट. What do you think? रील कटेगी? आई थिंक मेरा ही कट रहा है अभी तो. हा यू सॉ दैट. ये फ्रेम के बाहर चला गया लिटरली. $400 का लॉस किया था ना. आई मीन ट्रेड विथ स्मॉल क्वांटिटी. स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखो एंड टेक ब्रेक्स. टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, इफ़ यू आर ट्रेडिंग, एक ट्रेड विन हो गया, ठीक है, दूसरा सेटअप मिल रहा है, 90% श्योर अबाउट दिस सेटअप, कूल, इट्स अ गुड सेटअप, आई थिंक आई नो व्हाट इज गोना हैपन, गो फॉर इट. सेम if you're like lost one day, and how you like lost 400, like कितना कैपिटल है और कितना का तुम यूज़ कर रहे हो, कितना स्टॉप लॉस लगा रहे हो. बिकॉज मैनेज योर रिस्क. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेज योर रिस्क. तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में तुम एंटर कर रहे हो, इतना पैसा मैं दान कर दिया अभी. अब रिस्क फ्री चलो हमेशा. तुम देख रहे हो ये वाला, इस अकाउंट को मैं 100K तक लेके जाऊंगा. ओके ये 2000 से स्टार्ट किया था. इस अकाउंट को मैं 100K तक लेके जाऊंगा 1-2 महीने में. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो या ओके, रील नहीं कटी, मेरा कट गया. 0.1. थोड़ा छोटे से करो, थोड़ा छोटे लॉट से करो. ट्राई टू रिकवर दैट मनी एंड विड्रॉ मनी वेरी फ्रिक्वेंटली. हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखा मत रखो. विड्रॉ इट. enjoy the money. चलो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा था, हमने देखा राइट. बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा. सारे लोग बोल रहे थे इस लेवल पे गया तो यहाँ पे सेल करेंगे. क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे सेल करेंगे? यू टेल मी गाइज, यू ओनली टेल मी, कैन वी डायरेक्टली सेल फ्रॉम हियर? दिस इज ग्रेट एज मोमेंटम राइट. इतना बढ़िया मोमेंटम आ रहा है. डू यू थिंक वी गोना सेल फ्रॉम हियर? हेल फकिंग नॉट. वी डोंट सी एनी सेटअप. You're getting my point? We're not gonna sell from here. फटाफट लाइक कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो जो लोग देख रहे हैं अभी. आई नीड ऑल द पीपल टू सब्सक्राइब राइट नाउ. कल मैं या कल भी हम लाइव आएंगे डेफिनेटली. See, we're not gonna sell just because everybody is selling. Are we gonna sell? No. Nope. Okay. मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ यार. मैं कल भी लाइव आता, मैं रेगुलर लाइव आता हूँ. ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं हर रेगुलर लाइव आता हूँ. ठीक है, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे. ग्रेट एरिया 15 मिनट पे इट हैज़ एंटर्ड. ठीक है, 15 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप था उसमें इजीली मार्केट ने अभी एंटर कर चुका है. नाउ यू विल बी एबल टू सी. मैं इसको एक बार इसको हटा देता हूँ, ये वाले लाइंस को. इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है. थोड़ा शॉर्ट करते हैं चार्ट. मुझे नहीं पसंद है जब मेरा चार्ट बहुत ज़्यादा लाइक मेसी होता है. मेरे को थोड़ा
ओसीडी होता है उससे, ठीक है. सो लेट्स फोकस ऑन थोड़ा. Josh, let's go. My boy is back. I've been depositing money and losing. I have never withdraw money. At least this year, I must gain some profit. Definitely, you will gain some profit. Just join the community, brother. Come live daily. Trade with me. This is how you're gonna make money, right? Gold में ऐसा सेशन, गोल्ड में एजिया सेशन में बाय करके सो जाओ. नहीं 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 नहीं, अरे विवेक क्या बात कर रहे हो यार. आप क्या इन्वेस्टर हो क्या बाय करके सोने में? ऐसा घुसेगा ना फिर बढ़िया. बाय करके अगर सो गए तो स्टॉप लॉस लगा के सो, अगर सोना भी है तो. 1 minute very slow candle, ठीक है. what are we able to see right now? let's analyze from a different perspective right now. okay, जैसे मैंने बोला था 15 मिनट की फेयर वैली गैप पे ऑलरेडी आ चुका है. ओके, एंड नाउ इट इज inversing that 15-minute fair value gap. So high probability is that it might inverse and then continue going up. The only thing is that we are not taking any sort of trade, is that we do not have any setup right now, okay, or confirmation at the same point. It's just a momentum. We cannot trade on the basis of momentum. Second thing I would like to tell you, ये week जब मैंने बोला था ये वाला week create होता है, हमेशा मार्केट ऊपर जाता है and it is going up. बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं कि ओ यहाँ से सेल करेंगे. घंटा सेल करोगे वहाँ से? नहीं भाई, लिटरली गोल्ड इज पंपिंग एशिया सिंस लास्ट 5 days. चाइना, हाँ आई गेट इट, चाइना इज बाइंग एंड ऑल, बट लाइक तुम ये भी तो समझो ना कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक उनके पंप एंड डम से. उसमें हम पैसे नहीं कमा सकते. हमें हमारा परफेक्ट सेटअप चाहिए. Fuck, is it too zoomed in, dude? I'll zoom में थोड़ा. Okay, crazy. Let's go. अब आ रहा है रिजेक्शन. ओके, 15 मिनट पे रिजेक्शन आ रहा है. नाइस. लास्ट 5 मिनट, 5 मिनट पे नहीं आया बट 15 मिनट पे आ रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग. ऑल्सो देर इज़ नाउ दिस सपोर्ट. ओके, देखो मैंने क्या बोला था, जैसे ही ये वाले इसमें एंटर किया फेयर वैली गैप में, इट जम्प्ड एंड सेम थिंग हैपेंड विद दिस ऑल्सो. नाउ we're gonna take this out. Focus is on this. You might be able to see market coming and taking support off of this area if it wants to come down. ठीक है, वो अभी मूव कैप्चर कर सकते हैं बट अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है. लेट मी गो बैक टू द 1 minute टाइम फ्रेम. 1 minute टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है? जस्ट अ सेकेंड. accumulation, okay, pure accumulation on 1 minute time frame. It jumped, right? Yep. Fuck, is so hot. नहीं भाई, लिटरली गोल्ड. या ये पढ़ लिया था मैंने. ओके, नेक्स्ट 3 मिनट में रिजेक्शन चाहिए, अदरवाइज इज गोना कंटिन्यू गोइंग अप. नेक्स्ट 3 मिनट. डैम, लुक एट दिस कैंडल. 2 मिनट बचे हैं. लेट्स सी.
1 minute. It did traded into this area fully. Okay, any buy trade now? No, maybe after this, but not before that. What do you think, Vivek? From where you can buy? Give me one logic, or give me some sort of setup or some analogy that you have, some theory. Okay. Great ass candle. Great ass candle. 50% has been filled. We need, अगर ऊपर भी जा रहा है तो we need another opportunity. Just asking cause in your yeah, it is in FEG, right? Definitely, but FEG may be, that is one thing. Second thing, we need some setup of that area, right? At least we need market to like trade into this area, long and then small time frame. Okay, अगर ये वाला भी इसमें भी अगर आता है, then we'll be able to see something. Hold on. Today I'm risk free. Okay, I have no stress. We're risk free today, and that feels so good. It doesn't feel good. I have thought a cough. I'm like, I'm not feeling well, but all right. Still we're streaming. That's great. Just a second. Okay, let's go. It is rejecting. Gotta wait more. 3 minutes. Just a second, guys. I'll be right back. Keep the eye on the market.
We're back. We're back. We're back. We're back. Okay. So as I told you, like it is gonna come down थोड़ा, ठीक है, and वहाँ से most probably यहाँ से rejection दे सकता है, but right now it is creating this. समझ रहे हो ना? जब इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड. द ओनली थिंग यू कैन डू हियर इज जस्ट वेट एंड मार्केट टू कम टू सर्टन लेवल जहाँ से तुम बाय या सेल कर सकते हो, राइट? हियर वी कैन नॉट बाय और वी कैन नॉट सेल ईदर. ओके, दिस इज अ गुड एरिया दैट मार्केट हैज़ टू कम, बट इट माइट create a double top here. Okay, something like this. Let's see, अगर वैसा कुछ create होता है, that is good. Okay, we also need a liquidity sweep off of that area, so we'll also focus on that. Okay, it is going up. Okay, it is going up. Hold up, you might be able to see some reaction. Just hold your thoughts right there. I'll be right back.
ओके बैक लेट्स गो हम लोग आगे है वापस. ओके यार दिस सिचुएशन इज़ वेरी ट्रिकी राइट नाउ. देखो फटाफट आ जाओ, जो जो लोग गए थे फटाफट वापस आ जाओ, ठीक है. आई वाज थोड़ा बिजी विद थिंग्स बट या हियर वी आर बैक. राइट नाउ यू सी दिस इज अ लेवल जिसका जो हाई ऑलरेडी लाइक मार्केट ने टेक आउट कर दिया है. नाउ it has to go down, okay, it has to go down, but we don't have any confirmations as of now. The only thing is that we need market to at least like take out this high and then we can be like okay ठीक है यहाँ से नीचे जा सकता है. You're getting my point? And also it has to come to this level, that is also like a very crucial level that market wants to take down. Okay, अगर तुम यहाँ से sell भी plan करते हो, you're getting my point, यहाँ से sell plan कर रहे हो, then you need some sort of confirmation, at least rejection of below this area would help too. ठीक है, so focus on that also people who gone like just come back. Okay, ठीक है. यहाँ से तुम एक सेल प्लान नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करने के बाद तुम कर सकते हो. ठीक है, लेट्स सी अगर लोग यहाँ से सेल प्लान करते तो हाउ मार्केट इज गोना मैनिपुलेट दोज पीपल. ठीक है, यहाँ से कोई भी सेल प्लान हमने अभी तक नहीं किया. इट जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग टू सी कि किस तरीके से अभी यहाँ पे हो सकता है, हाउ इज गोना टेक आउट दिस स्टॉप लॉस. ठीक है, okay, let me see what is happening on the 5-minute time frame. Okay, 5-minute time frame pe you will be able to see that market is rejecting off of this area. Okay, it is rejecting off of this area very strongly. That means that it wants to continue going down, but also you see that this candle is fully bullish, right? So that is the reason that I was waiting for the confirmation. Definitely we are in this 15-minute fair value gap. We'll surely remove that right now, and it is going again on the bullish side. Okay, at least we need to see rejection from how many levels. Hold up, rejection यहाँ से. ठीक है, यहाँ से भी तुमको रिजेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकता है. सो वेट फॉर दैट एंड डेफिनेटली इट माइट टेक सम टाइम. लाइक समझ रहे हो ना, इतना जल्दी अभी रिजेक्शन नहीं आएगा बिकॉज 11-14 हो चुके हैं. गोल्ड में 4-5 दिनों से उसी टाइम पे रिजेक्शन आ रहा था, थोड़ा लेट. ओके, रिजेक्शन इन अ वे लाइक मोमेंटम 12 के बाद, 12:30 के बाद 1 बजे, राइट, 1 बजे परसों आई थिंक 1-2 बजे क्रेजी एस मोमेंटम आया था. ओके, बट वही होता है, वी आर नॉट ट्रेडिंग दैट टाइम. अगर ऐसा कुछ होता है डेफिनेटली आई विल कम बैक and I will share the trades with you guys. So make sure you have the notification on ताकि तुम लोगों को पता चले that oh I'm live, like you know I'm like तुम लोग देख पा रहे हो, तुम लोग ट्रेड ले पा रहे हो साथ में. So that is very important. Right now it is just like going in that zone जहाँ पर इसको जाना चाहिए. अभी let me just see how we can plan this thing up. फटाफट जो लोग गए थे वापस आ जाओ. Hype yourself up. Okay. यार अगर गिरेगा भी तो मैं किस बेसिस पे ट्रेड लूँ? जस्ट बिकॉज ये हायर पूरा हाई करके नीचे गिरा नहीं है. आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन, राइट? सी इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस एरिया एंड इट इज़ लीविंग दिस गैप एंड दिस गैप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ रहा हूँ, इट इज़ लीविंग दैट गैप एंड दैट गैप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम सेइंग, ठीक है. लेट्स गो फॉर अ परफेक्ट सेल राइट नाउ. आफ्टर दिस विल गो फॉर अ क्रेजी एस सेल. ठीक है, यहाँ पे हम एक सेल प्लान कर सकते हैं इस लेवल पे. ठीक है, इनफ ऑफ रिजेक्शन, इनफ ऑफ दिस, इनफ ऑफ दैट. अभी तक सेल प्लान नहीं किया है, यू हैव टू वेट फॉर दैट. ठीक है, जस्ट कॉज आस्किंग. ठीक है, या ओके, वी कैन प्लान दिस. द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक इस लेवल पे, देन वी कैन गो फॉर इट. लेट्स गो. ओके, come back whoever left, just a second guys. Focus on this trade, very important. Okay, and let me just take a trade off of this area very quickly. Okay, let's do this. Are you able to see this? I'll be back in 15 minutes. Okay.
look who is back. Okay. Let's wait for this trade now. Let's make this shit happen. It is accumulating at this area definitely, and you might able to see this trend line that is like down there. Okay, just a second. Let me just do this now. Hold up, guys. Hold up. ठीक है, we are at this level. It is a very interesting level. तुमको तो दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, let's come back. I'm tired of like sitting. Now I'm gonna like stand up and do this. Okay, you see that market is creating some sort of trend line at that area. You need to understand that like थोड़ा यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा रिट्रेस करे या और थोड़ा कुछ चीज़ें करे जिसकी वजह से हम थोड़ा यहाँ पे हिट ले सकते हैं. वो आई एम जस्ट वेटिंग कि मार्केट उस लेवल पे कैसे जाएगा, किस तरीके से वहाँ से रिट्रेसमेंट या एक ट्रेंड लाइन फेलियर हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है वेरी मच सून. ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. ठीक है.
What's up? Let's go. You saw that trade? मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? चलो इसको ये कर देते हैं एक्सटेंड. Let's fucking go. You saw that trade? Exactly. और जाएगा, डोंट वरी. भाई मेरे को बहुत बुखार हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है. दैट्स व्हाई लाइक कुडंट लाइक स्टेयर. मैं अपने बेड पे जाके बार बार सो रहा हूँ. बट स्क्रीन चालू रहेगी तुम लोगों के लिए. वॉच करते रहना, देखते रहना. इसको हम लाइव एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? बी हियर.